Hello everyone and welcome to the next session of Concept का खेल. Inside the topic of forensic traumatology, आज हम क्या देखने वाले हैं कॉन्सेप्ट के खेल में. The concept is identification of rifled gunshot entry wound. So कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है कि किस तरीके से हम गनशॉट की एंट्री वूंड का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं. राइट. तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ प्रोडक्शन which is very important in the entry wound of a rifled firearm. Right. Bullet enters the body through the skin while spinning on its axis, creating abrasion and grease color around the skin opening. तो इसमें हम जो important चीज देखने वाले हैं वो कौन सी है? There are two things which are highlighted. There is something called as abrasion collar and then there is something called as grease collar. अभी थोड़ी देर में देखते हैं वो दोनों चीजें होती क्या है. In the meanwhile, let's see what is the medico-legal importance of understanding this concept. The medico-legal importance is identifying abrasion and grease collar helps us in differentiating entry from exit wound. किस तरीके से हम एंट्री और एग्जिट वुंड को डिफरेंशिएट कर सकते हैं. राइट. सो लेट्स सी how bullet produces this abrasion and grease collar. Okay. So कंसिडर करते हैं कि ये एक राइफल्ड फायर आर्म है जिसमें से वो बुलेट फायर होगी which is going to create an opening in the body. So let's say this is the bullet which has been fired from this firearm and this bullet is revolving on its axis because we know राइफल्ड फायरआर्म की जो बुलेट है वो अपने एक्सिस पे रिवॉल्व करती है. राइट. व्हेन दिस बुलेट इज अबाउट टू एंटर द स्किन, सो लेट्स draw the skin barrier like this. Okay. So this is skin. So when this bullet is about to enter the skin, what does it primarily do? It indents the skin inside. तो पहले स्किन को अंदर इंडेंट करेगी और फिर रिवॉल्व करती हुई उस स्ट्रेच्ड पोर्शन ऑफ स्किन के थ्रू पियर्स करेगी. राइट. सो वी कैन सी दैट दिस इज द stretched skin, right? Stretched inwards. So what happens is when this bullet eventually passes through that stretched portion of skin, revolving through it, this area of the skin which is being stretched inwards, it comes in friction with the revolving bullet. As a result, eventually when the bullet has traveled inside the body, we see a hole which is called as an entry hole. But because the bullet has, you know, produced a friction around the entry hole, we can see this kind of friction mark all around the hole. और जब स्किन पे कोई रफ सरफेस फ्रिक्शन करता है तो क्या जनरेट होता है? एब्रेजन. सो दस वी सी डेवलपमेंट ऑफ एब्रेजन कॉलर. राइट. सो एब्रेजन कॉलर बुलेट की स्पिनिंग मोशन की वजह से होता है, स्किन के उस पोर्शन पे होता है which has been stretched inside as the bullet is penetrating through the skin. Right. दूसरी चीज हमने क्या देखनी है वो है ग्रीस कॉलर. राइट. ग्रीस कॉलर क्या चीज होती है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए रिकंसिडर करते हैं कि ये बुलेट जब इस वेपन से शूट हुई तो ये बुलेट भी तो वेपन के बैरल में से ट्रैवल करके आई और वेपन के बैरल के अंदर बार बार शूटिंग की वजह से काफी सारा स्मोक जमा होता रहता है. एंड व्हेन स्मोक डिपॉजिट्स ऑन द मेटालिक सरफेस, द स्मोक ends up producing greasing. So eventually when this bullet would have traveled through the barrel of this weapon, this bullet should have picked up some greasy residue on its surface. Okay. So this bullet has
greasy residue on its surface. And right at the edges of that skin, when this bullet will be piercing through the skin, right at the edges of that skin, क्या होगा? Consider if this pen is bullet and I'm, piercing this pen, which is going rotating through the skin. तो क्या होगा? जो इसके edges पे greasy residue है, वो जमा हो जाएगा. So whatever greasy residue is present on the surface of the bullet, it collects here, right at the edges of the skin, which is called as grease collar. So what do we understand by this concept is that rifled firearm से जो bullet निकलती हैं वो bullet skin पे तीन you can say outcome create करती हैं. One is the entry hole produced by the bullet. Second is the abrasion collar produced by the friction of the bullet to the stretched portion of the skin, right? And third is the grease collar, which is present right at the edges of the entry hole because of the surface wiping of the bullet by the edges of the skin. And if abrasion collar and bullet collar, grease collar, both are identified, grease collar will be present inside, abrasion collar will be surrounding the grease collar, that will be the presence outside. विच मीन्स अगर हम सेंट्रल टू पेरिफेरल देखें तो सबसे सेंटर में क्या होगा? एजेस ऑफ द स्किन, दैट इज एंट्री वुंड. उसके साथ में क्या होगी? अ रिंग ऑफ ग्रीस कॉलर. और उसके बाहर क्या होगा? अ रिंग ऑफ एब्रेजन कॉलर. दिस इज हाउ एंट्री वुंड, ग्रीस कॉलर एंड एब्रेजन कॉलर डेवलप्स. राइट, आइए देखते हैं इसके साथ में किस तरीके का एमसीक्यू लिंक हो सकता है. राइट, so the question says there are 6 gunshot wounds on a dead body. The autopsy surgeon determines that 3 are entry wounds and 3 are exit wounds. Okay, so there is no bullet present in the body. So the person has been shot thrice. There are 3 entry wounds and there are 3 exit wounds. All are recognizing feature of the entry wound except small in size, less bleeding, no abrasion collar, presence of grease collar. Now, ऑल्दो हमने इस टॉपिक में एंट्री वुंड के साइज की बात नहीं करी है, बट इफ आई गो बैक टू दी डायग्राम इटसेल्फ जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बनाया था, उसमें यू कुड सी दैट एंट्री वुंड इज अ वेरी स्मॉल होल corresponding to the diameter of the bullet. So this option is correct, that entry wound generally is smaller in size as compared to the exit wound. Do entry wounds bleed less as compared to exit wound? Yes, entry wounds bleed less. So both the options are true. No abrasion collar. Would it go in favor of an entry wound or an exit wound? This will rather go in favor of an exit wound. Presence of grease collar? Yes, this goes in favor of an entry wound. So all features are recognizing features of entry wound except no abrasion collar. ये क्वेश्चन आंसर करने के लिए हमने आज की ये टॉपिक को समझा. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो जहाँ पर हम फायरआर्म की रेंजेस की बात करेंगे. स्टे ट्यून्ड टू द चैनल.